Morning everyone. Today going to start with the further explanation for the chapter. Hanji beta ji, we are going to start further explanation for the chapter that is air. Air में हमने कल किया था. First was weather and climate. दूसरा हमने किया था temperature. Temperature में हमने first point किया था कि temperature of the atmosphere changes because the hotness and coldness of the air make the temperature of that particular area. दूसरी हमने चीज की थी insulation. हमने क्या था insulation. Insulation में क्या है amount of energy by the sun received by earth. Amount of energy discharged by the sun received by the earth. वो energy जो है that is insolation. So the temperature factor influence the distribution of temperature as we move from equator to tropical zones. Then the energy is going to decrease. The temperature will be going to decrease as we move from, you can say, equator to the tropical area and temperate area. Is it okay? So in this way, if we will be moving away, then the amount of insolation will be like interception by the earth. Amount of energy intercepted by the earth वो जो है इक्वेटर पे ज्यादा होता है. जैसे जैसे we move from the equator to the poles वो कम होता चला जाता है. Is it okay? This much was clear. So the amount of insolation decreases from equator toward the poles. Therefore, turn the next page. Temperature decreases and in the same manner. Now you understand why poles are covered with the snow. अब पता लग गया कि poles जो है वो snow क्यों होती है? Because amount of insolation absorbed by the earth from the sun is very less in this area. Fine. So this is the main reason. And if the earth temperature rises too high, अगर earth का temperature बहुत ज़्यादा high हो जाए, it would become too warm for some crops to grow. कुछ क्रॉप्स जो है उनके लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए, कुछ क्रॉप्स जो है उनके लिए कोल्ड टेम्परेचर चाहिए. तभी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है वो ग्रो करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है वो ग्रो करती है. सो टेम्परेचर अगर हम लोग बात करें, लाइक देयर इज अ एग्जांपल गिवन ओवर हियर इन आवर बुक कि अगर टेम्परेचर जो है, if you are living in a city, you people will observe more heat or more high temperature as compared to the rural area or in the village area, because in the village area surroundings are scattered, houses are scattered, farm fields are there, trees and vegetations are in a large extent और बहुत ज्यादा quantity में होते हैं. That is why they maintain the temperature, they maintain the coolness, because heat जो है वो trees जो है वो absorb करते रहते हैं days में और वो वहां पर environment जो है वो ठंडा रहता है. So the concrete, हमारे roads के road construction, building material, industries, smoke from the chimneys, smoke from the vehicles, all this are making more environment hot in the urban area. So factor responsible for making more heat in the or more temperature in the urban area are more constructed buildings, construction of roads, industries, smoke from the chimneys and vehicles. They are responsible. So the concrete and all this heating up during the day and the heat is released during the night. और रात को ये सारी हीट जो है वो रिलीज होती है. आपने देखा होगा आपके रूफ पे, अगर इफ यू विल बी गो ऑन द रूफ, आप छत पे शाम को गर्मी फील करते हो, छत बहुत गर्म फील होती है. क्यों होती है? बिकॉज ड्यूरिंग द डे टाइम दे एब्सॉर्ब, इंसोलेशन होता रहता है, एब्सॉर्ब द हीट, एंड ड्यूरिंग द नाइट व्हेन टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट कूल डाउन, और वो अपनी एनर्जी वहां पर छोड़ना शुरू कर. हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टू लो, from high to low. So this is the reason. So the crowded high-rise building in the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. Is it okay up to this? Now turn back. There are one mark question on the box, that is thermometer, barometer,
rain gauge, and wind wave. These are 4 points. Turn your page back. 4 pictures are being given over there. Thermometer measures the temperature. Thermometer क्या करता है? Temperature measure करता है. Barometer atmospheric pressure measure करता है. What it do? Atmospheric pressure means wind का pressure कितना है, wind कितने pressure के साथ blow कर रही है. उसके बाद rain gauge, that is measure the amount of rainfall कि कितने सेंटीमीटर rainfall हुई है उस area में. That is being given over this period, मतलब this instrument. So one is thermometer, measure the temperature. Then is barometer, measure the atmospheric pressure. Third is rain gauge, rain से ही पता लग जाता है, measure the amount of rainfall. And wind gauge, wind से ही पता लग जाता है, that show the difference directions of the wind. Wind gauge जो है कौन सी आपने देखा होगा कहीं दूर दूर ऐसी चक्कियां घूम रही होती है हवा में. That is to show in which direction wind is moving. ऊपर एक छोटा सा हल्का सा एक बॉक्स सा लगा होता है और उसके बाद wind वो directions बनी होती है और उसमें वो घूम रही होती है. Have you ever seen? You can see it on a picture which has been given on page number 23. दिया हुआ है. So that is basically all the points which you have to do for 1 mark. Dash is used to measure the temperature. Okay. Barometer is used for measuring the dash. Okay. Rain gauge is used to measure the. Okay. Which instrument is used to measure the direction of wind? So in this way we have to learn, and in this way the question for 1 mark can be asked. Got it? Fine. So turn to the next, that is air pressure. अब देखो air जो है, air always move from high pressure area to low pressure area. Air हमेशा कहाँ करती है? From high pressure area to low pressure area. You will be surprised to know that air above us passes us in a great force in our body. हमारी body में force भी करती है. Air जो है वो हमारी body को force भी करती है. If it is in a gentle blow, then it is considered to be as a breeze. And if it is in a strong blow, then it will be called as a storm. When the movement of air will be in the gentle, ठीक है, that will be called as a breeze. हवा चल रही है, हम कहते हैं it's very pleasant, हवा चल रही है. But when it will be in the strong, then it will be considered as a storm, तूफान, जिसको हम तूफान बोलते हैं. So however, we don't even feel it. This is because air passes from us all direction and our body exert a countermotion. अब हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, but air is there. But that air doesn't affect us. हमें कुछ affect नहीं कर रही है. क्यों? Because it is moving in all direction in a common way. But when it will be in a strong way, then we will be get influenced. कई बार हमें वो थोड़ा सा pressure भी डालती है and we move toward the back side. और अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमें आगे जाने से भी रोकती है थोड़ी सी हवा. So that is pressure. Air pressure is defined. Now look, this is one mark question. What is air pressure? Air pressure क्या है? एयर प्रेशर क्या है? अब देखिए एयर प्रेशर के लिए it is defined as a temperature exerted by the weight of air on the earth's surface. Weight of air on the earth's surface. Air pressure is defined as a pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. Earth surface पे ना weight pressure पड़ रहा है. As we will be moving in a car and we can measure the weight and feel the weight of wind when we are moving and just put our hands outside from the window. तो वो हमें pressure exert होता है. So that weight. So as we goes up on the layer of atmosphere, pressure fall rapidly. Pressure जो है वो fall होता जाता है. Pressure कम होता जाता है. ठीक है? जी बेटा, pressure is defined as exerted by the weight of air on the earth's surface as we move from
height from the different layers. जैसे ही हम layers में ऊपर जाते रहते हैं, T is M T E, that is troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. जैसे जैसे हम move high करते जाते हैं, pressure क्या होता जाता है? Decreases होता जाता है, and in the ocean pressure is more as compared to the land surface area. ठीक है, up to this point is clear? Very much okay. So the air pressure is highest at the sea level and decreases with the height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. Horizontally अगर बात करें एक ही लेवल पर, मीन्स अगर हम ट्रोपोस्फेयर की लेयर पर ही एयर प्रेशर की एक्सर्ट करें, बात करें तो एयर प्रेशर इज मोर इन द ओशन एज कंपेयर टू द लैंड सरफेस एरिया. हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करें, ठीक है, vertically means different layers, horizontally within one layer but different landforms on the different landforms. Then आ जाता है in areas where temperature is high, air get heated and rises. जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर एयर क्या होगी? गर्म हो जाएगी, गर्म होगी, और वो कहाँ जाएगी? ऊपर को जाएगी, उड़ेगी, ठीक है. So it moves high and this create a low pressure area. Low pressure area is associated with the clouded sky. जहां पर लो प्रेशर होगा वहां पर क्या होगा? क्लाउडेड स्काई हो जाना शुरू हो जाएंगे एंड वेट वेदर, वहां पर वेट वेदर. Wherever there is low pressure, that area will always filled with the air which is travel from high pressure area to low pressure. वो heated up होगी, वो गर्म होकर travel होके low pressure area में आएगी. They create clouds, or cloud that area will always remain wet weather. Is it okay? Clear है? Next either the areas having lower temperature, जहां पर अब low temperature है, you can feel clear skies in the mountain area. Clear sky होते हैं वहां पर. सर्दियों में भी धूप बहुत अच्छी खिलती है, रात को बहुत ठंड होती है लेकिन धूप बहुत अच्छी खिलती है. So low temperature air is cold and it is therefore heavy. Heavy rain air sink. Heavy क्या होती है? Air sink करती है, नीचे को आती है and create a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny sky, which I have already given you this example. In the cold areas, definitely air is get cooled, ठंडी होती है, तो then it is sink. अब देखो एयर जो है वो सिंक क्यों लिखा है? क्योंकि जो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, अगर वो डाउन आए तो उसको सिंक, ठीक है. So that sink and create a मतलब you can say clear sky with sunny days. So air always move from dash to dash. Air always move from high pressure areas to low pressure area. For this you have to remember a pressure cooker in your kitchen. When the pressure is get exerted in the pressure cooker, whistles come. Whistle आती है, वो pressure अंदर से निकलता है. This is the example. You should always remember that pressure always, air pressure always move from high pressure area to low pressure area. Is it okay? Then आ जाता है next हमारा concept. हमने जो do you know में देखना है. Standard unit of measuring temperature is degree Celsius. These are 1 mark question. Please underline on page number 24, left hand side, first box. The standard unit of measuring temperature is dash degree Celsius. Okay, degree Celsius is used to measure the dash. Okay, unit of temperature. It was invented by dash Anders Celsius. Anders Celsius ने इसको इन्वेंट किया था, इसके कारण ही इसको डिग्री सेल्सियस बोला जाता है. On the Celsius scale, the water freezes at dash degree, 0 degree, and boils at 100 degree. So this is, you can say, temperature. Temperature is measured by instrument thermometer. The instrument which is used to measure the temperature is thermometer and uses the
हाँ जी, हम लोग देख रहे थे कि हाउ टेम्परेचर जो है दैट इज मेजर्ड विद द थर्मोमीटर एंड वी मेजर द डिग्री इन द फॉर्म ऑफ सेल्सियस. इट इज इन्वेंटेड बाय एंडर सेल्सियस and Celsius is a scale on which freezing is done at 0 degree and boiling is done at 100 degree. Okay, fine. Next concept आता है, on the moon there is no air. On the moon there is no air, hence no air pressure. वहां पर air ही नहीं है तो air pressure कहाँ से होगा? नहीं होगा. So this is another very important task. Why astronauts have to wear special suits? Because हमारे अंदर प्रेशर है, हमारे अंदर वेन्स वाटर पूरा ब्लड है, तो हमारे अंदर प्रेशर है. So that is why astronauts have to wear special protective space suits filled with the air when they go to the. उनको एक स्पेशल प्रोटेक्टिव एयर वाला सूट जो है वो पहनना पड़ता है, स्पेस सूट्स. क्यों? क्योंकि इफ दे डू नॉट वेयर दीज स्पेस सूट्स, अगर वो नहीं पहनेंगे, एंड देन द काउंटर प्रेशर एक्सर्ट, बाहर से प्रेशर जो है हमारा हाई प्रेशर एरिया उधर जाएगा, वहां एयर ही नहीं है तो वो आएगा, एंड द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट वुड मेक अ ब्लड वेसल बर्स्ट एंड एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड. वो जो है उसकी ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, burst हो जाएगी सारी bleed. That is why to protect, astronauts are always wearing the protective suit when they are moving to the, as there is no air in the. Is it okay? This is 3 marks portion can be asked. ठीक है. Next आ जाता है wind. Should I start that wind concept? Okay, the movement of air from high pressure to low pressure area is called wind. What do you mean by wind? Wind क्या होता है? Low pressure area. बेटा जी, wind क्या होता है? Wind when the air moves, when air moves from high pressure to low pressure. ठीक है. So that is called wind. वो क्या कहलाती है? Wind कहलाती है. So you can see the wind at the work as blow dry leaves drawn on the pavement or up. आप देख सकते हैं हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, पेड़ों के पत्ते हिलते हैं और पेड़ों के पत्ते टूट के हवा जो है उन पत्तों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है. कई बार मिट्टी भी जाती है साथ में हवा के साथ. So that shows that trees during the storms are leaving their leaves and moving from one direction to another direction. Sometimes when the wind blows gently, we see it's blowing away smoke or fine dust. जब gently move करती है तो वो क्या कहलाती है? Breeze. But strongly move करती है तो क्या कहलाती है? Storm. Very good. At time when the wind can be so strong, it is difficult to walk against it. When the wind is very strong in a high speed, then it will be difficult for us to move. हम उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, हाथों तो अपना पकड़ के चलते हैं ना. And if it is very strong, then we never take the risk to move out from our homes. हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं. So you must have an experience. It is not easy to hold an umbrella on the windy day. हवा के दिन में अगर हम लोग अम्ब्रेला होल्ड करें तो अम्ब्रेला हमारा पीछे 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 जाता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड दैट, है ना. और वो टूट भी जाता है कई बार. अम्ब्रेला जो है उसकी वायर्स जो है वो अप हो जाती है प्रेशर के कारण. So that you might have been experienced, you have experienced not an easy to hold umbrella on the windy day. Think of some other example when strong winds have been created. कोई अपनी आपकी लाइफ में एग्जाम्पल हुआ होगा when you had observed about the winds. अब देखिए, probably you problems of you. Winds can be broadly divided into 3 types. Winds कितनी टाइप की हैं? One is permanent wind. अब देखिए यहाँ पर winds जो है, again we have to make types of wind. Types of wind. Wind कितनी टाइप की है? Number 1 is permanent. Second is seasonal. Third is local. Okay, permanent.
winds होती हैं, permanent, seasonal and local. Permanent wind, they are called as a trade winds. They are called as a trade winds, and moving from you can say western lies, eastern lies are permanent wind. These winds blow constantly throughout the year in a particular direction. ये जो परमानेंट विंड्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करती हैं थ्रू आउट द ईयर इन परमानेंट डायरेक्शन. Permanent winds move throughout the year permanently in one direction. Fine, they are called as permanent winds. Seasonal winds क्या है? These winds change their direction in the different season. ठीक है, seasonal winds क्या है? The winds which change their direction with the season. Like summers में move from sea to ocean, मानसून में, और retreat में from ocean to from land surface to sea. हाई प्रेशर होता है, मैंने अभी बताया था, ओशन में हाई प्रेशर होता है, वहां से विंड मूव करेगी तो लैंड सरफेस पे आएगी, लैंड सरफेस पे आएगी तो वो जो विंड्स है वापस भी जाएंगे जब लैंड सरफेस पर हाई प्रेशर. ठीक है, सो एग्जांपल इज मॉनसून इन इंडिया. मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. आप देखो यहाँ पर जो अब बारिश हो रही है, वी पीपल आर रिसीविंग रेनफॉल इन दिस period. This is monsoon period because the wind is coming from the ocean. All the high pressure wind holding with the moisture content come from ocean surface to the land surface. And land surface पे आके वो बरस रही हैं, rainfall, precipitation कर रही हैं. But when in the autumn season, अब मैं कह देती हूँ retreat season, तो मैं नहीं समझ आएगा, जब monsoon वापस जाएगा, then the pressure on the air will be air on the land will be more. Then these winds will move back from land to sea. So that type of movement, reversal movement from land to sea in the month of October and November. अक्टूबर और नवंबर में हवा ठंडी हो जाती है ना, हवा ठंडी होती है कि नहीं होती है? सो वो जब वापस जाती है फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, वो जो है यहाँ से सीजनल विंड की एग्जांपल है, एज इंडिया इज हैविंग मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट. देन आ जाती है लोकल विंड्स which blow in certain areas only at local level. So these blow during a particular period of a day or a year in the small area. For example, land and sea breeze. You can recall the hot and dry local winds. Northern plains, हमारे northern plains में कौन सी wind है? लू. मई एंड जून में ये हमारे यहाँ लू चलती है ना, आपने सुना होगा घर पे, आज बहुत लू चल रही है, बहुत गर्म हवा है. हवा is there, wind is there, but it is very hot. That local wind is considered to be as a loo. Is it okay? So today we will be going to do up to this. Next class we will be going to complete our moisture and types of rainfall. Is it okay?